So I am inviting Lokesh and I'm inviting Manoj, two young, very dynamic people who have been in the of education of languages and education of skills. Hi Manoj, back. We are back. Hello, Hello, good hello, evening. hello. Yes. So it is three times, and we. I hope you the voice and everything is It's clear. better now, much clear. It's Yes, perfect, so perfectly sorry fine. everyone for this glitch, but I we are right back and with a lot of juicy talk, and I hope there are a lot of things to learn here from Manoj and Rushil is back. I was asking you, Manoj, how did you start to be a language trainer and that to the language German? So I did my language in 2006. I started. I was just in my final year of college, my BCom honors, and suddenly I thought I have no platform. I mean, I have no future. So everybody was doing that bait chal kind of thing. Everybody was doing MBA, CA, CS. So somebody told me to do something different. My mentor said, okay, it's right time because foreign languages are going to have a good and bright future in next 5 to 10 years. So I randomly joined German classes with Goethe, and A1 level I started in 2006, and I did this language I mean non-stop for 2 years as full-time program, and that's how the interest got automatically generated. It kept on generating. Wonderful. So you chose German randomly, and tell me, how did this random idea of yours actually benefit you in the end? I'm sure it did, as I can see your everyday working. Yes, it took years. I mean, I should not say I got connected to the language instantly, and I got success. Not success. A good platform to use my language skills, instantly. It took years and years of this thing. So I started as a language expert with a company called Siemens in Kolkata. So Okay. I just as called as agent, as calling profile I was in the voice process. In 2013, I took this training as a full-time profession. I worked with schools, colleges, and I worked for multiple corporates as a corporate trainer. So I never thought of working with corporates as the language expert. I always, thought of using this skill as a trainer. So it has been more than 10 years since I have been conducting my training sessions for the individuals, professionals, students, and everyone, for the corporates too. So tell me how beneficial it is to know a second language, a foreign language. It's always beneficial, Mitari. I mean, you are connected to another world, but that's definitely sure. I mean, when I don't know any language, I'm just connected to one community. If I'm speaking English and I'm joining any corporate as English language expert or let's say voice process, so I'm only connected to the community which has only to do with the English language, be it Spanish, French, German, Japanese. If you are doing any foreign language, you are not idly connected to the language. You are connected to the world, the second world, which you have not lived in ever. It's a new thing, Right. and there's immense exposure which you can get. I was just going to say the exposure that comes from knowing another language, the comfort of having this knowledge, and when you are traveling abroad, when you are conducting business, when you're talking to people, even if it is Right. tourism that you are going, it is always beneficial to know a lot of languages. And that, Absolutely. yes, having traveled domestically and internationally, I find that knowing a language is a big plus. And also, being an NLP practitioner, Manoji, I feel that when you know or try to learn another language or another skill, your Mhm. memory increases, your brain power increases, and it is very beneficial for you as an individual to always try and learn new things. So, Absolutely. yes, so I find that learning another language is totally a great idea. And That's I'd correct. like to know from you, could you give my audience any tip as to how to go about learning a new language? You just need to opt a language, no matter German, no matter French, no matter Spanish, no matter Japanese. Just have to opt the language and just be with it. It's and there is always a stage when your mind, stops saying, "Okay, boss, ho gaya, ab mere se nahi hoga," because Right. everybody wants to command a language. But when it comes to command a language or master a language, you need to put lot of efforts.
तो एक Right. दो साल में लगता है कि यार अब बस नहीं हो रहा मुझसे और नहीं होगा, एंड यू स्टार्ट टू गिव अप. सो ये नहीं करना चाहिए. आई मीन एवरीबॉडी शुड स्टिक टू द लैंग्वेज एंड वेट फॉर द राइट टाइम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वी ओवरनाइटली वांट सक्सेस. ओवरनाइटली हमें लैंग्वेज करा, आज एक साल के बाद अच्छी जॉब भी चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं होता. एवरीबॉडी, everything takes time. And Mitaji, if I may ask, oh, if I may also ask, I mean, I'm very curious to know. You just mentioned NLP practicing, right? So, what made you take up this life coaching as NLP practitioner? I'm just curious to know about that. Wonderful. So, coming to your question right away, but before that, I would like to tell my audience, Manoj ji ने कहा है slow and steady. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल सकती है. ऐसा नहीं है कि आपने आज लैंग्वेज सीखी और कल आप उसके मास्टर हो जाएंगे. देखिए, आपने हिंदी और अंग्रेजी भी धीरे धीरे ही सीखी और धीरे धीरे ही मास्टर हुए. तो किसी भी लैंग्वेज या जर्मन, स्पेनिश, कुछ भी आप सीखना चाहें तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और धीरे धीरे उसको सीखना की कोशिश करते रहिए और निरंतर प्रयास करिए, आगे बढ़िए. एंड योर question about, and you're very curious to know how I ended up learning, being a life coach and an NLP practitioner. And believe me, I get to answer this question a lot because everybody knows that I, by profession, I'm an exporter, and that is what I have been, and I've been working in MNCs before that. लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से जीवन चलता है, जिस तरह से राह आपको लेके जाती है, so I came across a lot of people, a lot of women especially, Manoji, who were suffering and who did not have a person who could talk to them or a person who could hear their, their suffering. तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और यंग गर्ल्स के साथ काम करती रही, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई होना चाहिए जो उनको समझ सके और उनको एक बहुत ही फ्रेंडली वे में राह दिखा सके. Right. और मुझे लगा कि people are coming to me for advice, people come to me and talk to me, and that is when I thought that let me also try to learn this skill. और किसी भी स्किल, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप कुछ भी अच्छा करना चाहें. 10 years of educating in German. I should say I have trained more than 1,000 so far. I mean, it has been, the numbers have been more than 1,000 plus. I don't remember exact, but yes, because I have been conducting I used to conduct my session for school students, for university students, professionals, corporate training. I mean, companies I have taught. So, I mean, 1,000 numbers must have crossed almost 1,000. Oh, and that's wonderful. That is very, very good. So far, yes, the journey has been really beautiful. Ups and downs, lot of ups and downs, lot of failures, lot of struggles. But yes, end of the day, as a trainer, also we actually learn a lot. We learn a lot. It's as a trainer, as a coach, it's always a two-way learning. I feel that whenever I have a session for whether it is life coaching or whether it is in a corporate for leadership or communication, right. Every session that I have taken, I come out learning something or the other. And as Correct. a lifelong, that's how I define myself. I am a lifelong learner and I learn every single day. So tell me one of your biggest achievements that you feel that you have done in this field of training in German language. My biggest achievement is I was a lucky guy to be opted for the biggest program from Germany's placement cell, which was in 2014. I mean, there were two programs launched by the Indian government and the Germany's government. So Make It in India was by the Indian government, and parallel program was conducted by the Germany as Make It in Germany. So I was lucky to be part of there. I was the only Indian selected for the program as the trainer for the program. The only Indian 2014. That I should say it was the big achievement in my life. That's amazing. And in fact, Germany is the biggest hub of trade and commerce and Yes. in the European Union. And I wonder if why more people are not joining in to learn German language. So which language do you think is very difficult to learn? If you were supposed to say counsel Meeta Mathur कि Spanish सीखे या German, तो आप मुझे क्या suggest करेंगे? कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं है मीता जी. You just have to start. देखो, हर लैंग्वेज अपने आप में एक नहीं है. अगर मेरे को हिंदी नहीं आती, मुझे एग्जैक्टली संस्कृत नहीं आती, मैं संस्कृत सीखने बैठूंगा ना, तो उसके मास्टर मुझे सिखाएंगे, एंड आई हैव टू स्ट्रगल.
So it's only the dedication of a person. German is more in demand. The question should be which language is more in demand nowadays as per the job future is concerned. Language अपने आप में सारी एक लेवल, सबका लेवल एक है. जापानीज कर लो, आप स्पेनिश करो, Agreed. सीखना हमको ABCD से ही पड़ेगा. करेगा, आपको स्टार्ट जीरो से करना पड़ेगा. दैट्स राइट. सो अब इट इज ऑल अप टू अस कि हम उस लैंग्वेज को कितना शिद्दत से लर्न करते हैं. सो आई ऑलवेज नो, आई कीप टेलिंग माय पार्टिसिपेंट, डोंट लर्न द लैंग्वेज, जस्ट फॉल इन लव विद द लैंग्वेज. द मोमेंट यू फॉल इन लव विद द लैंग्वेज, यू विल लर्न इट ऑटोमेटिकली. इतनी खूबसूरत बात कही है आपने कि फॉल इन लव विद द लैंग्वेज. सो किसी भी स्किल के लिए, वो एक भाषा के लिए ही नहीं, किसी भी स्किल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू फॉल इन लव विद इट, एंड दैट इज व्हेन यू ग्रास्प इट मोर ब्यूटिफुली and easily. And for everything you have to start with ABC. Thank you, Lokesh. I think ये एक हमारा quotable quote moment हो गया आज के लिए कि everything has to start with ABC. And मनोज जी ने कहा fall in love with that skill. That is amazing. So my next question to Lokesh ji is, Lokesh ji, tell us about this platform of skill rediscovery. Skill rediscovery ही क्यों? स्किल्स रिडिस्कवरी आपको ऑफर करता है तरह तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म और स्किल बेस्ड कोर्सेज, जो आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन, पीपल गो विद द लैंग्वेज कोर्सेज, पीपल गो विद द टेक्निकल कोर्सेज, पीपल गो विद द अप स्किलिंग, और इफ दे आर ऑलरेडी अप स्किल्ड दे ट्राई देयर टू रीस्किल. वो एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे कोर्स के बाद तीसरा कोर्स सीखते हैं ताकि अपने आप को अपडेट कर सके. तो जो अप स्किलिंग रीस्किलिंग है, इसको ब्रिज करने के लिए आप तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अपने आप को एनरोल करते हैं. कहीं पर आप डाउनलोडेड लेक्चर्स को डाउनलोड करते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डाउनलोड करके वहां से सीखते हैं. बट स्किल्स डिस्कवरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर तरीके की स्किल सेट देखने को मिलेगी, जो कि लाइव क्लासेस में भी है, साथ के साथ रिकॉर्डेड बेस्ड लेक्चर्स के साथ भी अवेलेबल है. सो वी आर मोर फोकसिंग ऑन लाइव क्लासेस विद द लाइव ट्रेनर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द इंडिया. क्यों? क्योंकि कोई ट्रेनर दिल्ली का बेस्ट है किसी स्किल में, कोई बेंगलोर का ट्रेनर बेस्ट है किसी स्किल में, कोई उड़ीसा का ट्रेनर बेस्ट है. एंड ऑल्सो वी आर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म. It is not restricted in English only, Hindi only. If you are comfortable with Gujarati, Tamil, Telugu, so you can learn here, you can teach here in your native language. So आपको पता है कि भाषा आपको कोई भी भाषा का आना, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आए तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है. एजुकेशन इज अवेलेबल इन एनी लैंग्वेज. और दूसरी बात ये कि आपको ट्रेनर्स देश के हर एक कोने से अवेलेबल हैं. with every kind of language. कि स्किल्स जो है, सॉफ्ट स्किल्स, इसके अंदर आप अपनी हॉबीज सीख सकते हैं. और आज जब मैं तो आपने भरतनाट्यम, कथक और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑफर करे हैं जो कि आप लाइव कोचेस के साथ भी सीख सकते हैं और डाउनलोडेड वीडियोस के साथ भी सीख सकते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ टू वे लर्निंग भी है. आप हैंड टू हैंड अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ऑन रियल टाइम बेसिस आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो लोकेश जी, अभी हम कितने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे? और अभी एज इफ नाउ हम अराउंड अभी 20+ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एंड डे बाय डे कोर्सेज और ट्रेनर्स दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. आप देखेंगे कि फ्रॉम बिजनेस टू टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी टू लाइफस्टाइल आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज यहाँ मिलेंगे. और जैसे जैसे अभी बिकॉज ये एक स्टार्टअप है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, ट्रेनर्स आ रहे हैं, कोर्सेज आ रहे हैं, और आपको अभी टेक्निकल कोर्सेज भी और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज भी यहाँ पर बहुत जल्द नजर आएंगे. तो ट्रेनीज को ज्वाइन करने का क्या तरीका रहेगा लोकेश जी? ये भी मेरे ऑडियंस को बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा. ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. यू जस्ट नीड टू विजिट ऑन skillsrediscovery.com. अपने मनपसंद का कोर्स आपको चेक करना है, मेंटर की प्रोफाइल चेक करनी है. यू कैन वेरीफाई ईच एंड एवरी मेंटर. और उसके अलावा अगर आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन जब दिखेगा तो वहां पर सबसे नीचे आपको दिखेगा कि उनके अभी करंट और अपकमिंग बैचेस कौन से हैं. जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको पता होता है ये पर्टिकुलर बैचेस होंगे ट्रेनर्स के, तो आप अपना शेड्यूल के हिसाब से एक पर्टिकुलर बैच और एक पर्टिकुलर ट्रेनर चूज करते हैं, राइट. और अभी यहाँ पर भी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप मे बी आप जॉब करते हो सकते हैं, आप मे बी कॉलेज में होंगे, आप मे बी स्कूल में होंगे, मे बी आपका कोई ना कोई शेड्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनर के शेड्यूल के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और वो सब करने के बाद यू जस्ट नीड टू पे द अमाउंट. वहां पर जब आप अपनी फीस पे करेंगे तो अपकमिंग जो भी नियरेस्ट बैच होगा, नियरेस्ट डेट का, वहां पर आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएंगे.
और अपने फेवरेट ट्रेनर से फेवरेट कोर्स आप सीख पाएंगे. This is Live very, classes. very interesting, and I'm very impressed by this young dynamic guy, Lokesh, who has created this platform, and it is available to everybody. It is at a very economical cost, and there are various and different kind of programs that are available, not just languages, but how to improve yourself, personal grooming, and house decor, your hobbies. Different kind of languages, as Manoj ji has said, that German and Spanish and Russians are, and several other languages are available. So now coming back to Manoj ji, communication as such, because I'm a communication coach. तो जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी है, उनके लिए कम्युनिकेशन की कुछ टिप्स छोड़ना चाहेंगे आप? Your last So words on. you are the best person to answer this. So you are the communication trainer. This question should kindly come from our side कि आप टिप्स दीजिए. हम देखो हम अपने अपने डोमेन के बारे में बता सकते हैं. You are the master in your domain. So आप टिप्स दो प्लीज कम्युनिकेशन के. Thank you so much for this opportunity. Then the question comes to the person who's asking. Okay, so from me, one tip today is that try to connect with your audience. And the way to connect to your audience is to know your audience beforehand. कोशिश करिए, मेहनत करिए, पहले अपने ऑडियंस को समझिए और फिर कनेक्ट करिए. कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो कन्विंस और कन्वर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. तो पहला स्टेप कम्युनिकेशन में है कि कनेक्ट करिए अपने ऑडियंस के साथ. और यस, फॉर एवरी स्किल कोचिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, सो दैट आप बहुत आसानी से सरल स्टेप्स में कोई भी स्किल को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. राइट लोकेश जी? बिल्कुल. और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ. जैसे जैसे अभी जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है, जॉब्स को लेकर के पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं एम्प्लॉयर्स के, और एम्प्लॉयज की भी अभी सप्लाई में भी बहुत तेजी से एक नंबर इंक्रीज हुआ है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक. तो कहना कि अगर लोगों को लगता है ना उनके पास जॉब्स की कमी है, तो आई वुड से कि आप जॉब पे डिपेंड ना होकर के ऐसा कोई स्किल सेट सीखिए जहां पर आप अपना फ्रीलांसिंग का हाथ आजमा सकते हैं. आप अपना कोई वेंचर क्रिएट करने में उसको हेल्प में ले सकते हैं. आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द जॉब ओनली. कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि यार मैं क्या करूं, जॉब नहीं है मार्केट में. जॉब तो बहुत है, बट अगर आपको नहीं मिल रही, इट्स योर फॉल्ट आई वुड से. बट इसमें भी फॉल्ट अगर आप इसको फॉल्ट की तरह ना लें, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो स्किल सेट की जरूर कमी है, तो आप उसको पूरा करिए और कहीं ना कोई नई स्किल सीख करके आप आगे बढ़िए. बहुत डोंट ही नीड टू बढ़िया डिपेंड ऑन बात जॉब. कही लोकेश ने. वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ दरवाजे बंद हैं, तो एक दरवाजा खुद खोलिए और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करिए. एंड टुडे आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स to please log into skillrediscovery.com and find yourself some really good skill sets that you can acquire in an efficient and economical manner. Correct. So I bid goodbye to both these dynamic young No, guys. one statement yet to I would like to finish complete Lokesh's statement. Please go ahead. So Lokesh ने कहा मतलब always increase your skills. So to quote into this final statement, somebody told me long time back. I mean, around in 2009 when I was struggling with the job. So somebody told me, do not love your boss. Always love your work. The moment you love your work, you don't need to love your boss. Just keep loving your work. Whatever you're doing, just keep loving that. Always keep enhancing your skills. Nothing is going to work out except your skills. Great. This forever statement is very true. Very true. Very true. So this entire session today has been that of quotable quotes from both these young guys, and बहुत ही अच्छा और मजा आया आपसे सबसे बात करके. And thank you so much for joining us, and we'll be in touch. और जिस तरह से मैंने कहा कि please get on to Skill Rediscovery, find yourself a course. This is Meeta Mathur signing off, founder of Big Ladder, life coach, NLP practitioner, and a communication trainer. Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you, Meeta ji. Thank Bye-bye. you so much. Thank you.